शालिनी के साथ। और आज के हमारा गेस्ट है मेरी डॉटर का एक प्यारा सा नन्हा सा फ्रेंड फैजान। तो रीज़न क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं और स्टेज पे अपने टीचर प्रिंसिपल के सामने अगर आप अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो आप कैसे जाएंगे? एक सर्टिफिकेट लेंगे, नमस्ते करेंगे या हाय हेलो करके निकल जाएंगे। बट यहाँ पे जो बहुत वायरल हो गया है फैजान, जो वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन है, उसका वायरल इसलिए हुआ है क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट अंदाज में वो क्या एंट्री मारा है। मैं आपको दिखलाती हूँ। This is how I graduated. Faizan Alam. Welcome to एक मुलाकात शालिनी के साथ। So the video that we saw अभी, he's actually my school friend and मैंने अपनी मम्मा को दिखाया था, उसने जिस दिन अपना रील पोस्ट किया था and तब हाफ डे हुआ था, अराउंड 50K व्यू हुआ था and मम्मा was like ये लड़का आगे जाएगा, इसका रील बहुत आगे पहुंचेगा। And then now it is reached 12 million and we are anticipating 20 million, तो आराम से। जब फैजान इतना फेमस हो गया तो फिर क्यों नहीं, एक बनता तो था उसके साथ यूट्यूब, तो मैं उसको वेलकम करती हूँ। और हियर गोज टू तो ये रहा फैजान जो मेरी डॉटर का फ्रेंड है और इतना क्यूट और नॉटी है, ये आप देख ही सकते हैं इसका बदमाशी कि पूरा देश से वायरल हो गया इसका ये वीडियो इनका। Okay, first you give your introduction. Okay, so hello peoples, namaste, adab. My name is Faizan Alam, and as you have seen in the video, I was the boy in that video who did that thing during the graduation and dhamaka करके viral हो गया। So I just graduated from the University of Nottingham in the UK. I did Bachelor of Science in Industrial Economics, and now I am working with my dad in my family business, and now Shalini auntie has invited me for this normal candid talk show interview type thing. And since I already know Muskan from school, so I was like, let's do it, let's come on this talk show, let's have a conversation. But then स्कूल में भी ये नॉर्मल किड नहीं था, मतलब एक तो इतना नॉटी, इतना और कुछ शरारत हुआ है क्लास में, इसका नाम ऑलवेज टू बी दैट। ये सब झूठ है। एंड देन somehow जब मार्क्स मिलता था सबका नॉर्मल, इसका एकदम हाईएस्ट। एंड वी सो सरप्राइज्ड बिकॉज ऑल द टाइम ही इज आउट हैविंग फन, या फिर क्लास में बदमाशी, क्लास में भी कुछ ना कुछ चीज डूइंग, पर इसका वही रहता है, बदमाशी करेगा पर जो आउटकम रहता है अच्छा ही। बट पता है हमारे टाइम में भी स्कूल में यही होता था, जो लड़का सबसे नॉटी होता था वो सबसे इंटेलिजेंट होता था। Thank you so much. So I just wanted to ask him, like, you know, what is it like you are that confident, or what went inside your head while you were doing that? Was it planned or was it unplanned? So this was to, let me tell all of you guys, this was totally unplanned what I did on stage. तो मैं ऐसा, I'm this type of person कि I just want, like, I'm a very happy-go-lucky, cheerful type of person, and जो भी I do in life or like any type of thing, I just want to do it with a lot of energy and like energy, enthusiasm. And graduation चल रहा था, तो this was not planned, nothing. So I thought everybody's going up and doing normal handshake and doing. I'm like, yeah, this is good, but a person graduating from university, it's a very big milestone for every person in their whole life. And I'm like, इतना बड़ा चीज को मैं normal handshake नहीं करना है. I want to do something different, but क्या डिफरेंट था, I had no idea what जो to do. डिफरेंट है वो दिमाग में ही I had no idea Instagram पे। कि ये डिफरेंट करना है। एंड तो I went, मेरा नाम क्या है, फैजान आलम। मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था कि what do I do, like what do I do? I'm like, जो मन में है let me just do, and the first thing which came to my head was let me just do my normal bhangra dance, like part, it was not even bhangra, it was something else only. मतलब instead of walking you did this Basically full character नहीं था, like, you know, just showing himself. That is just me. So I'll be just portray myself, and luckily the pro vice chancellor, all the lecturers over there, the entire audience loved it so much. They were such a good sport. They passed the vibe check thing, in my opinion, which is the Gen Z colloquial term, passing the vibe check. So and even the pro vice chancellor, when he saw me doing this, पहले तो उससे झप्पी कर लिया. When everybody was doing the handshake, मैं तो झप्पी कर गया. Yeah, he's like, oh, and he's like, जाओ.
But एक तो वो लोग अंग्रेज हाँ। और तुम हम देसी लोग देसी आपको दे मतलब प्रणाम तो कर नहीं सकते तो तुम नमस्ते करके और जपी And I think that's what the audience and that's what people have liked so Like much it, yeah. because they thought, oh, it's an Indian who has done this in a foreign university, that too in yeah. Britain, and he's still in his Indian roots, like he's doing his pranam, he's everything you did like हाँ, Indian so- culture follow किया तुम yeah, and they were like, oh, it's a proud Indian movement. That's what I think. That's why was one of the reasons why the video blew up so much. और आपको बता देते कि वो वीडियो का रीच कहाँ तक गया है how much million So currently it is on 14 million on Instagram. within how many days I think within 2 weeks. within 2 Within 2 weeks weeks, 14 million इसका वो रील 10-15 सेकंड का क्या रीच छा गया And meme page also, like we're seeing Pakistan meme pages or some other meme pages, they're showing it. And Hindustan Times also posted they it. called you na I mean what happened So the story with Hindustan Times was very weird. In fact, I just woke up one day and I was seeing it and this was the day the reel reached 10 million views. okay It reached 10 million views well to in 11 days. तो उसी में मैं तो जन्नत में था भाई. I'm like मतलब stardom में थे. I'm like I've completed life. I'm like ऐसा मतलब वो मीम है ना जिंदगी बदल दिए जज्बात बदल दिए वो पाकिस्तान मीम. It happened with me. I'm like मैंने जिंदगी बदल दिया है with this thing. So I was like 10 million views and randomly my friends like I didn't even know Hindustan में आ गया. So my friends from university, they all like message me like, Faizan, you're going to get the biggest hit, biggest cake, biggest dopamine hit of your life. I'm like, why? What happened? He's like, you have come in Hindustan Times, you have come in CNN of News 18 in India, Hindustan Times, you have come in Free Press Journal, they have covered your entire story. And then I saw, I'm like, why? And if you search my name, and if you search the title, तो गूगल में सीधा आ जाएगा those 5 न्यूज़ आपको आपको नहीं लगता कि पूरे इंडिया में इतना जल्दी फटाक से मतलब 10-11 days में 14 million आना So that उसी में मैं तो खत्म करता हूँ like I've completed life अरे और कुछ नहीं चाहिए मेरे को No, अरे yes, अभी तो बहुत कुछ अभी आएगा डोंट वरी एग्जैक्टली है कि नहीं काफी लोग अपना रील्स बनाते हैं कंटेंट क्रिएट करते हैं बट बहुत रेयर होगा इसकी तरह जो एकदम नेचुरल वे में कंटेंट क्रिएट करता है विद कॉन्फिडेंस तो वो कहाँ से आता है मतलब आंटी आई थिंक कॉन्फिडेंस मतलब इट इज जस्ट इन मी इट इज इननेट इट इज लाइक इनबॉर्न नेचुरल मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ लाइक वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ इट इज जस्ट विद एनर्जी एंथुजियाज्म एंड आई थिंक माई थिंकिंग इज कि आई वॉन्ट like people to remember like this moment and like I want people to remember whatever I do like they were like oh ye Faizan aisa banda hai he does funny stuff and in fact whatever funny things and this stuff with whatever reels I make whatever funny things I say whatever vlogging I do it's with energy and because I want to I want to entertain other people like when I see people are happy and entertained when they watch me and they watch my content I'm like I get a dopamine hit I'm like oh he's laughing because of me it's a dopamine hit is a word which I use very commonly, where if somebody appreciates me or somebody gives me a compliment or if somebody laughs at me, I'm like, oh, मेरे को तो dopamine hit मिल गया लाइफ में अब. तो आजकल के टाइम में पता है लोग हंस नहीं रहे हैं exactly. और तुम हंसा रहे हो मतलब यू आर डूइंग सच अ बिग थिंग फॉर सोसाइटी और मेरे को लगता है मतलब लाइक बीइंग माय डॉटर खुशी जो मेरा जो नेचर है वो थोड़ा तुम में कैसे आ गया No, even when I started, when I made my Instagram public, I started posting. So Mama wanted me to be more active, to post more me. Yes. But then so happy like there's so like supportive people in this world where they see a funny content they message you and they're like and these are all random people like obviously my friends and my followers like you guys to message me. The moment you got stardom from this reel, Stardom word is actually giving me a dopamine hit right now like अरे भाई stardom. He was having only 600 followers on that day and now around 7,000. एक suggest करो कि आजकल के तुम लोग के एज के जो बच्चे हैं they also want to earn something like बहुत लोग बहुत हाई एजुकेशन नहीं है बहुत लोग बहुत नहीं है इतना इन्वेस्ट करने का तो डू यू डोंट थिंक कि कंटेंट जो क्रिएट हम लोग कर रहे हैं वो वैल्यूबल है कि नहीं आजकल के टाइम में फॉर यूट्यूब फॉर योर इंस्टाग्राम because people started earning from YouTube nowadays and especially your age guys and especially my age and the trend which is 100% true you're 100% right where now I'm seeing the trend jahan pe people of my like me and Muskan's generation like the Gen Zs the new generation they are more going towards making content creation and posting themselves version of providing value
to people through this social media, through Instagram, Exactly. TikTok भी बैन हो गया इसलिए Instagram इतना पॉप अप कर इंडिया में, लेकिन YouTube and ये लोग कर भी रहे क्योंकि there's a very big opportunity to monetize our content. Exactly. And you'll get brand deals. Pahले you're getting famous, you're getting the dopamine hit which everybody wants to get. You're getting brand deals, you're earning money also. So now अब ऐसा time पे आ गया like people लोग actually consider कर रहे to It's a full-time job Full-time, now. yeah, basically like a and full-time the best job, as thing a is source of content income. creation. It's not like you have to have a degree or special education. at Literally कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसको उनका डोपामिन हिट मिलता है उससे, like you know people enjoy making it. Literally अब घर बैठे मेरा फोन सभी के पास है, जिसको मन करता है Instagram फ्री का है, आप डालो और उसके कितने लोग फेमस हो रहे हैं, चाहे they coming from well off family or they Village coming से from a भी। normal family. Anyone can create 100%. content, and that's why I think it's becoming so famous because brands are collaborating. People become like YouTubers and become big influencers. So I think that's why content creation for our Gen Z generation, like it is a value दिया जा रहा है, it is बहुत importance दिया जा रहा है, and it has actually become a full-time Like, job for people now. PR team is not looking for the celebrities. Now they are looking for the Influencers, influencers. yeah. Because we are not charging so much money for Exactly. doing any ad. But if they contact celebrities, they will ask for the Exorbitant millions and amount of money. millions. Even though celebrities are, I think, in a different level, but I think now influencers have also become Celebrities उस now. type of celebrity. वो लोग Exactly. big influencer ये लोग movies में आ रहे हैं. हाँ. So that's the reach where you can like do from this type of career, like becoming influencer. I'm not saying everybody who just creates content should consider as a career. If you're not working out, like you should definitely give it a try. If you're into They keep going trying. my parents, though, they were over the moon. Like my dad, he's more. He's getting a dopamine hit more than me. Like पूरा दिन my papa is on in my Instagram stalking my reels. Like Fazan, 1 million. Like when it is touching 1 million, when it is touching 2 millions, before I get to know, my dad sends me a message. Like Fazan, 1 million हो गया, 1 million हो गया, ये हो गया. So he's himself enjoying a lot, and he's telling like his friends, उनके friends are calling them, saying Mahmood, my dad's name is Mahmood Alam. तो आपके बेटे तो छा गए पूरा, उनका रील्स मेरा एक्सप्लोर में आ रहा है, छा गए गुरु, छा गए. एंड मैं पापा ने हाँ छा गए. तो मेरा ये कहना और सोचना है कि अगर आप कुछ भी कर लो दिल से करो और नेचुरल रखो. हर लोग नेचुरल में बिलीव करता है कि Exactly. नहीं. अगर आप जरा सा भी फेक शो करेंगे, आर्टिफिशियल शो करेंगे ना, तो वो लोग को वैल्यू, मतलब उन लोग को लोग ज्यादा लाइक्स नहीं करेंगे. एंड कितना देर तक यू कैन कीप योर फेक आइडेंटिटी, Fake दैट्स द थिंग. yeah. मतलब इवेंचुअली बट काफी लोग होते हैं कि दे ट्राई टू क्रिएट अ पर्सोना फॉर सोशल मीडिया, लाइक द ब्रांड दैट दे हैव इज डिफरेंट टू व्हाट दे एक्चुअली आर इन लाइफ. बट जितना हम देखे, लाइक इफ यू आर नेचुरल ओनली, इफ यू जस्ट शोकेस योर लाइफ और व्हाटएवर फनी स्टफ यू डू, व्हाटएवर वैल्यू यू प्रोवाइडिंग, जैसे आंटी शोकेसेस हर लाइफ इन अ थिंग, आई ट्राई टू मेक फनी वीडियोस एंड whatever trips I try to make content, whatever I do. मतलब जिसमें जो मन खुशी मिल रहा है ना वो कर. Yeah, just upload whatever you want. And You never don't write a bother script. and don't think कि वो क्या सोच रहा है. आपको जो अच्छा लग रहा है ना, आप वो करो. Yeah, the moment you stop thinking what other people think, the moment you stop creating content for others, you create content for yourself, हाँ. you will automatically get views and get comments and get love, because people, if they like you, they like you. Chinese सुनो, तुम तो ऐसे की जब मेरा कॉलेज में थे फर्स्ट ईयर में, तो चीफ मिनिस्टर लालू यादव स्टेज पे आए हुए थे और स्पोर्ट्स डे चल रहा था हम लोग का, और इट वाज अ वुमेन्स कॉलेज. तो मेरी एक फ्रेंड बोली कि शालिनी, अगर तुम लालू यादव को जाके, लालू यादव को लोग ऐसे ही बोलते थे, Yeah, कोई ये नहीं पूरा- बोलते थे चीफ Chief मिनिस्टर. Minister, yeah. तो वो उस लालू यादव को एक गुलाब का फूल उठा के जाके दे दो और वो 100 रुपए देंगे. हमने ये कौन सा बड़ा बात है. एक गुलाब का फूल लिए हम, स्टेज पे गए और सबसे पहले सर को देके प्रणाम किया. सर, हाँ ऐसा वैसे ही फूल दिए और सर को, अरे सर पहचाने मुझे आप मेरे को अवार्ड दिए थे लास्ट मंथ और कोई अवार्ड नहीं मिला था. ठीक है, वो भी बोल रहे हाँ. तो उन्होंने सर पहचान गया ना, अपनी फ्रेंड को इशारा कर रहे थे. देखिए. उसके बाद हम गए जाके 100 क्या 500 रुपए की 5 लड़की मेरे को चैलेंज कर रखी थी, सबसे 100 रुपया लिए और फिर पार्टी किए. आई वाज लाइक दिस ओनली. तो I think यही दिखाना है पूरा जिंदगी में. If you do, I think because they both are like so like just authentic with their content, तभी I think it's the people who touch हो रहा है, like People are loving people are it. relating, they're enjoying it, they're liking it, and imagine they're two different generation and like both are creating content in a
Mama showing a lifestyle, he's showing the funny wala thing. And see the age difference. Age difference. And now we are doing an interview like a TikTok show together, and we are vibing also. Like Vibe check is done. Vibe check is full there. Thank you so much तुम्हारे यहाँ पे and it was My great pleasure, fun. my pleasure, my pleasure. पूरा में बहुत enjoy मजा, किए बहुत मजा। and I guess आप लोग भी enjoy कर रहे होंगे ये blog देख के. Hope if you like it then please like and subscribe and don't forget to comment him and please go and watch in Instagram. If you can check it over here. Yes. Put it There- We'll put it over here. Like, proper, we'll put it over here. Check out, like, share, subscribe, and obviously to Auntie's channel, you guys are already good viewers, but more people see, more people subscribe. Of course. Ek mulaqat with Shalini. Shalini. Bye. Ta-da! Adab. Adab.